अच्छा खेलना पड़ेगा. You know, undoubtedly. And that being said, ladies and gentlemen, I think it's time that we head into the game. And this is Team Payal going up against Team Kashvi. What's on the line is a seat for the finals. And we'll find out if there is going to be a best of three. The one who reaches, or rather wins, 2 games out of those 3 will become the winner. So if you win the first 2 games, there's no requirement to play the third. And, well, Team Kashvi, they draw first blood. और यहाँ पर व्हाट आई कैन सी दैट फ्रॉम टीम पायल एक जो जेन एक्स टी प्लेयर नाम के प्लेयर हैं ये बिल्कुल स्पॉन पे हैं. ऐसा लग रहा है कि ये क्रिएटर है अपनी गैंग के. बट मे बी ये वो एंगल से एक अच्छा खासा बैक स्टेप ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं. बट सी दैट स्टेबल गेम. 1 मिनट गेम खत्म होने में आला है. 1 मिनट में मतलब 1 मिनट खत्म होने को आया है. बट एक ही फ्रैग यहाँ पे ड्रॉप हुआ है. बस वहीं पे हंटर ने पुशन किया. इजी पीजी को पिक ऑफ करा. एक और पिक निकालते उससे पहले इंस्टेंटली ट्रेड बैक करा. जाने से पहले सर्विस ने भी यहाँ पे पायल को एलिमिनेट कर दिया है. काश्मी के पास एडवांटेज है. बट अभी कहानी अभी दिल्ली बहुत दूर है. अभी कुछ भी बोलना बहुत ज्यादा गलत रहेगा. बट ऋषि ही नीड्स टू चैनल हिज इनर पावर्स सो दैट अब जब टाइम है जवाब देने का वो जवाब दे सके. You know, Krat, at this point, I really like what the approach from Team Kashvi is because of the way they're taking those positive traits. Now, again, for the ones who are wondering what positive traits are, this is something that Hunter did, right? He just pushed in, managed to get 2 finishes, and eventually he did succumb. But still, you know, getting that 1 point extra lead is helping his team to maintain that small lead that they have. And this is where the eyes are definitely going to be on Rishi because he was a star against Regaltoss's team. But now he's got to prove his mettle against the big boys. You know, ये बात तो मैं बिल्कुल मानूंगा. Cause ऋषि ने when Payal faced Regaltoss का game 1 के बाद he had to take that complete sweep off. पायल ने दोनों राउंड निकाले and change the entire flow towards her side. But यहाँ पर ऋषि को step up करना पड़ेगा. Cause काशवी leading a team very nice in a subtle behavior. सबने एक अच्छा खासा पॉइंट होल्ड कर रखा है. इजी पीजी ने एक और फ्रैग निकाला. हंटर को टेक डाउन करा. एंड स्कोर लाइन के अंदर अभी भी काशवी के पास एडवांटेज है. एंड जेन XC9 ही इज एंकर. ही इज एन ग्रेट एंकर प्लेयर. एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं और ही इज मेकिंग श्योर कि एक पोजीशन से बैठकर कम से कम 3 से 4 एंगल्स को कांस्टेंट पोक कर सकते हैं. You know, this is where it gets more intense, right? Those strategies really coming into play. Players are just not running around like headless chickens, rather being very, very cautious with their approach. And I like what both these teams are doing, right? It's still a close matchup. Now, you know, they've got that one of those anchors, like you said. And what he's basically doing is trying to cut the flanks because we've seen there have been those tendencies out of Team Kashvi's teams where players like Hunter, you know, just try to remain hidden and suddenly sneak up on you and launch that sneak attack. And for which you're not clearly prepared. For now, again, it's just that 1 point lead, but rather has increased as Kashvi takes down Payal. Now the battle is on. You know, अभी ऋषि के अगर स्टार्ट देखेंगे, ऋषि के पास अभी भी एक भी फिनिश नहीं है. वहीं पे 2 बार ये ऑलरेडी सर्वर से बाहर जा चुके हैं. एंड वहीं पे अगर पायल और काशवी की बात करेंगे, आई थिंक पायल के पास 4 डेथ्स है. KD 0.25 चल रहा है. बट वहीं पे देखिए, नाइस शॉट. ऋषि ने सपोर्ट करा. एंड यस, तनुज को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है. अब लग रहा है ना सेमीफाइनल्स है. जो हमने क्वार्टर फाइनल्स में से कास्ट करे हैं वो काफी ज्यादा वन साइडेड हो गए थे एक बार के टाइम के बाद. बट अब लग रहा है कि सेमीफाइनल्स है. दोनों टीम को इस गेम का इंपॉर्टेंस पता है एंड दे हैव बीन प्लेइंग लाइक दैट ओनली. बट तनुज ने यहाँ पर एक अच्छा ग्रेनेड पॉप करा. ऋषि को उस पोजीशन से बाहर निकाला और जैसे ही वो ऑफ गार्ड सिचुएशन में आए, बैंग ऑन पनिशमेंट. Yeah, indeed. And, you know, at this point, Payal is getting back at her soul sister. And, well, it was revenge. Dish, well served, Cole. As Summit look at him against the world. What is he doing, Krat? Because I really could not process what was happening out there. यहाँ पे कोशिश अच्छी कर रहे थे वो. उनकी बंदूक यहाँ पे टैप पे हो रखी है और वो लाइक ही वाज ट्राइंग टू होल्ड दो शॉट. बट यस, अब आपको पता है एक तो टीपीपी ऊपर से आपके पास शॉटगन है. आप क्लोज रेंज के अंदर आएंगे, आपको एक बुलेट कनेक्ट कराने की जरूरत है और उसके बाद जवाब खुद ही हो जाएगा. और वही चीज यहाँ पे होती हुई दिखी. यहाँ पे सर्विस को भी पिक ऑफ करा ग्रेनेड से. 5 मिनट गेम में ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और हमारा जो स्कोर बोर्ड है वो ये कहता है कि अभी टीम काशवी के पास 3 फ्रैग्स की एडवांटेज. Oh, now we've got just 5 minutes left on the clock, and you know, when we were thinking that the previous games could be slow, but this has crossed it all, and players are being very vigilant. You know, just not letting their bodies out online, and
rather play the patient game, rather just rely on grenades a lot and make do once your opponent is right out in the open. But for now, just when Team Payal had equalized the numbers, suddenly Team Kashvi strike back. I'm just having this thought in mind कि अगर दोनों में से कोई भी जीतता है, when they are going to face team एहसास का गेम प्ले पायल और काशवी से तो कम ही रहने वाला है. सो ये जो एडिशन होगा इस टीम का वो एक फायदा जरूर क्रिएट कर सकता है. बट व्हेन दैट मैचअप इज गोना हैपन, रेजर, बल्लू एंड क्रिमिनल, दे नीड टू मेक श्योर कि वो उस चीज को कंपनसेट कर सके, बिकॉज पायल एंड काशवी दोनों काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं. Now, clearly, SR's team is one of those teams to really watch out for, especially with those three players. And even she being a creator, I love her enthusiasm, right? Every single time she comes into play, she's got that game face on, and all the gamers can relate. And for now, the score lines are leveled up, and every single player being really watchful of where they are going, what they want to do, and searching for all these tiny, slim angles, those slight pixels visible, and you are gonna get punished. दो प्लेयर्स काफी देर से अपनी पोजीशन पे बिल्कुल भी हलचल नहीं करते हुए दिख रहे. दैट इज हंटर एंड सर्वेट. उन्होंने एक एंगल होल्ड कर रखा है. काशवी ने और काशवी एंड तनुज ऑल दो प्लेइंग लिटिल एग्रेसिव. तनुज को कवर की सख्त जरूरत है. अगर क्लोज रेंज को जाता है देन तनुज को बचाना आसान नहीं रहने वाला. बट इजी पीजी विल बी द वन हु विल बी टेकिंग डाउन तनुज को. तनुज ने यहाँ पे पोजीशन तो स्पॉट कर लिया, बट व्हाई सो डेस्परेट? उनको जरूरत है नहीं करने की, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी एडवांटेज है यहाँ पर, और उनके पास एक ही फ्रैग का एडवांटेज है. उनके ये ओवर कमिटमेंट वाले जो मूव्स हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है. काफी ज्यादा ओपन के अंदर रोटेट करने की कोशिश करें, बट यहाँ पर इजी पीजी टीपीपी का सपोर्ट देते हुए क्लोज घुसे एंड उन्होंने यहाँ पर दुश्मन को जमीन के अंदर 10 फुट नीचे गाड़ के दिखाया. बट पायल काफी कम एचपी के अंदर रोटेट करने की कोशिश करे. रेडियस खोला है, शॉट्स यहाँ पर मिस करते हुए, बट पायल वाज डैम प्रिसाइज. ही गॉट तनुज डाउन एंड हंटर वहीं पर ऋषि को मारकर इंस्टेंटली ट्रेड बैक कर देंगे. Yeah, I mean, this is exactly what you would need from your IGL, leading the team from the front, setting an example. Now, suddenly the morals of the players have risen, but not quite clear or evident in terms of how the points are right now. It's still Kashvi's game. She's doing impeccably well, and well, who said they're gonna take a walk in the park, right? Just when Abish was having a talk with them, like, we're friends, we're sisters, we'll not fight, and suddenly so much of that seriousness being evident, visible, and Kashvi, she's just staying hidden at this moment and waiting for an opportunity to strike. I believe that's gonna come anytime soon. दे आर डेडिकेटेड प्लेयर्स जो अपने ही जोन के अंदर बैठे हुए हैं. बट तनुज की तरफ से ओवर कमिटमेंट आई और वहां पर काशवी ने भी फायदा उठाया. पायल को पिक ऑफ करा, बट काशवी भी ट्रेड बैक हो गई. स्कोर बिल्कुल लेवल हो चुका है यहाँ पे. 19-19, 2 मिनट्स ऑन द क्लॉक. इसका मतलब 120 सेकंड, 10 सेकंड और कम हो चुके हैं. 110 सेकंड के बाद हमें पता चलने वाला है कि पहला सेमीफाइनलिस्ट, पहला ग्रैंड फाइनलिस्ट यहाँ पर कौन होने वाला है. बिकॉज अब हमारे पास वन प्लस डोमिनेट 3.0 के 3 मैचेस बचे. पहला मैच ऑलरेडी लाइव है. एंड तनुज, dude, you need to wake up, cause हर बार you are moving ahead your team area. आप हर बार कुछ भी करे बिना मर के आ रहे हो. Look at him, look at him. He's made that aggressive maneuver yet again, just inside that central boxy area. One good grenade and he's pretty much done. He really needs to understand that. Or maybe they're trying to sell a fake over here. Or maybe they're just using him as a pig to the slaughter, because at this point, Krat, from what I can perceive is, he just wants to open up. He wants to become the punching bag where his teammates might just go in, and Tanuj, oh, he just revealed himself. I'm pretty much sure he's doomed. Easy peasy. अगर वहाँ पे spot नहीं कर देना, then Tanuj can cause, could have caused lot of problem. But Jensi काफी कम HP के अंदर है. यहाँ पर TP पे लेने की कोशिश, but the choice of target was bad. अगर वो जेनेक्स को pick off कर देना पीक करके भी, तो चीजें बदल जाती. But he was focused on easy peasy. उनको पता है अगर easy peasy को भी मार देते, जेनेक्स फ्री में आते हैं यहाँ पर. And वो एक कहते हैं ना, लालच बुरी बला है. उसका prime example हमें यहाँ पे देखने को मिला. Kobe must be proud of this one. एक तीर से 2 शिकार करना कोई इनसे सीखे क्राइट, क्योंकि हर बार वहीं पे जाके होल्ड कर रहे हैं. ये जो छोटा सा फोर्ट है ना, हाई ग्राउंड वाला, यहीं पर सब टीम्स अपना गेम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. फाइनल 60 सेकंड्स, 23 पे यहाँ पर स्कोर लेवल हो चुका है. एक पिक ऑफ लेने के बाद भी दे कैन स्टिल गो फॉर द पैसिव अप्रोच, बट उन्होंने सर्विस ने निकाली है शॉटगन. सामने वाले को घुसने की जरूरत नहीं है, बट
Okay then. यहाँ पर एक नया अपडेट देखने को मिला, but no, no, no. Last moment it was Kashvi got that advantage, but it was hell of a close match. It went down to the wire, and this is exactly the kind of intensity that we wanted for our first semi-final game, and indeed we got to see that and witness that happening live in action. And bear in mind that it's still not over. Payal, she's got revenge in her eyes. She's gonna make a comeback, but Kashvi, she's pretty chill right now. She knows that she's got the job half done, but the other half still remains. Yes, it is the fact that if Payal gets a sweet revenge on Kashvi, and that is exactly what the fans want, because, well, to be honest, of course, they belong from the same family. Of course, they're sisters, but when it comes down to the battlegrounds, nobody is gonna back off, and well, Kashvi seems relentless, right? She just wants to get done with it. Really good start for her, 2-0 up ahead. No doubt, यहाँ पे 3-0 का स्कोर ऑलरेडी इनके पास है, and it looks quite familiar कि भाई इस बार जो अप्रोच है काफी ज्यादा आसान रहने वाली है. No left, no right, बस instant push and secure some free frags. मतलब स्टार्टिंग के अंदर विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल प्लेयर उन्होंने 3-0 की एडवांटेज बनाई है. उसके बाद इवन तो ड्रॉप वन प्लेयर, फिर दो प्लेयर की एडवांटेज बनाई. अगर आप कैपिटलाइज भी करेंगे ना, इक्वल ट्रेडिंग करेंगे, एडवांटेज आ चुकी है. Oh, now this is where Kashvi is in mood for some stomping over here. The way she's been playing this grenade can actually ricochet and do a lot of damage, at least flushing her out of play. Well, I mean, quite unintentional, but great value. उन्होंने ये बिल्कुल इंटेंशनल लगा सकते हो आप. और उसके बाद क्या, ग्रेनेड का आपको जोन ऑफ करने के लिए काम आते हैं, उन्होंने वही करा. उन्होंने पायल को भी सेफ पोजीशन से बाहर निकाला एंड ही लिटरली वेलकम्ड हर विद ओपन गन्स. और उसके बाद क्या था, पायल ड्रॉप मोर फ्रैग्स, एडवांटेज स्टिल ऑन द काशवी साइड. Definitely, and at this point, Krat, this is a different version of Kashvi that we're getting to see in play. Now, she's not one of those players or the leaders who kind of sits back and, just chills and watches her team participate, right? She's doing everything needed over here to go on and win this thing. So, now look at Payal. She's playing with fire. The way she's gotten inside that central compound, I'm pretty sure Sarvit would want to punish, but no. Payal comes out on top. That's a proof. Like, she's a regular streamer और वो रोज इतनी प्रैक्टिस करते हैं, अपना गेम खेलते हैं. कंसिस्टेंसी तो यहाँ पे बनी जाती है. ऋषि एंड जेनेक्स होल्डिंग अ नाइस पोजीशन, एंड उन्होंने यहाँ पे जो एडवांटेज क्रिएट करी गई थी काशवी की तरफ से, उसको अब थोड़ा सा अपने फेवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं. बट ऑल दो अभी भी टीम काशवी इज लीडिंग विद 4 फ्रैग्स. और अब ऋषि ने, अगर ऋषि स्पॉट नहीं हुए, ही कैन ब्रिंग हेल ऑन टीम काशवी. बट अगर स्पॉट हो गए देन प्रॉब्लम हो सकती है. बट काशवी ट्राइड हर बेस्ट टू रिटेलिएट, और उन्होंने स्पॉट भी करा, ऋषि को डैमेज भी दिया, पर ऋषि वाज नो मोर प्रिसाइज और उसके बलबूते पे उन्होंने निकाला. बट यहाँ पर हंटर वेरी वेरी बैड पोजिशनिंग यहाँ पर. और ये देखिए जितनी भी प्लेयर फोर्ट में बैठे थे सबको ढेर सारा डैमेज, बट ही गॉट लिटिल ग्रीडी एंड ही वेंट डाउन. ऋषि का फ्लैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. अगर ऋषि टिकते ना थोड़ी देर और, वो चीजें बदल सकते थे. Had he used some grenades or anything to really flush out the players, that could have paid off. But, like you said, greed consumed him. And, well, that could be really fatal for Team Payal at this point. Because for Team Payal to win, Rishi, he needs to step up. He needs to show his A game, exactly what he did against Wriggletos. But now as things stand, this has been a little bit more on the face of it, right? We've seen players going in, look at Rishi, but instantly slapped on the face by Sarvit, who's got good control of that central area. This is a problem with TPP. अगर आपके पास information नहीं है और आप literally इसको एक पार्क की तरह घूमने जा रहे हो, then you can land anywhere in a landmine. और वही हुआ, सर्वित ने पोजीशन होल्ड कर रखी थी, हाथ में शॉट करती और वही हुआ, स्वागत करा सीधा. और इन्होंने मिड एरिया को पूरा अपने नाम पे कर लिया है. ऑलरेडी इनका केडी डबल चल रहा है. रिलोड करेंगे, फिर रिपोजिशन करेंगे, एंड दिस टाइम ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा एरिया का कंट्रोल इस वक्त टीम काशवी के पास है. स्कोरबोर्ड की बात करेंगे तो 14-26 फ्रैग का फर्क है यहाँ पर. वह ऋषि ने थोड़ा सा डिस्टेंस क्लोज आउट करा, बट तनुज भी वहां पर जेनेक्स को पिक ऑफ करके उस एडवांटेज को अपने फेवर में फिर से ले आए. Mad props to Sarvit for what he's really doing, right? Especially it takes a lot of cojones just to try and execute something like that at this stage.
especially when you know one bad mistake and Team Payal might get control. Now look at how limited how limited the players of Team Payal are at this point. You know, they cannot move around a lot. They're just waiting for those opportunistic moments to capitalize on the situation. And every single time they step away, or rather step out to take a shot, somebody from the backlines who's providing cover. Oh, that's a good one from Kashvi. And now it looks like she wants to end it. I think we got the winner. We got the first finalist for the 1 plus dominate 3.0 powered by 1 plus 11 5G. Do you know fixes is phone के अंदर 360 hertz का sampling touch rate है. Of course, I do. Normal phones में कुछ भी नहीं होता उसके मुकाबले. I mean, being a gamer, I think I did have to test my hands on it, and I'm intending to get one for myself. And if you do also want to do that, you know, everything is down there in the description. We've got all our links, but it has boiled down to this. Ladies and gentlemen, final 3 limbs for Team Kashvi, and she is our first grand finalist. No doubt, यहाँ पर I don't think anything in this world can stop her to be the first finalist of this game. And अब होगा असली matchup. Because अब Kashvi is a very good player. जो अगला matchup है, अब वो बताएगा कि क्या होगी चीज़ें. But yes, good semi-finals. Payal fought like a warrior queen, but in the end it was the Princess Kashvi who got the match turned. 2-0 से उन्होंने यहाँ पे shut down करा Payal को. I was not expecting that. I was hoping for a third matchup. But हमारे जो लीग ऑफ से उन्होंने भी बड़े रूल अलग से बना रखे थे फिक्सेस. अगर पहला मैच टाई हो जाता, then दोनों टीम को 1-1 पॉइंट मिल जाते. Yeah, and that could have, been a little bit more spicy, but we intended to keep it a little mild. But, things had definitely got